Hello, hello, hello. Welcome back to my channel Arshi Ansari. चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? रूट, स्टेम, लीव्स, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम important families. The wide range in the structure of higher plant will never fail to fascinate fascinate us, even though the angiosperm shows such a large diversity in external structure or morphology. They are all characterized by presence of roots, stem, leaves, flower, and fruits. In chapter 2 and 3, we talk about classification of plant based on morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms, one and standard definition. We also need to answer about the possible variation in different part found as adaptation of the plant to their environment, that is adaptation to various habitat for protection, climbing, structure, storage, etc. If you pull out any weed, you will see that all of them have roots, stem, and leaves. They may be bearing flowers and fruit. The underground part of the flowering plant in the root system, while the portion above the ground form the shoot system. ऊपर वाला जो है वो शूट सिस्टम और नीचे वाला रूट सिस्टम, वेरी common thing, basic thing. The root. In majority of the dicotyledonous plant, the direct elongation of the radicle lead to the formation of primary root, which grows inside the soil. It bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots. The primary roots and its bases constitute and its branches constitute the taproot system. Primary root and its branches constitute the taproot system. ये दिखा रहे हैं यहाँ पे. As seen in the mustard plant figure 2.5.2a, ये वाली एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे इस पूरे चैप्टर में. In monocotyledonous plant, the primary root is short-lived and replaced by a large number of roots. This root originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system, as seen in the wheat plant. Fibrous का example wheat plant, taproot का example mustard. In some plant like grasses, monstera and banyan tree, root arise from part of the plant other than the radicle and are called adventitious root. The main function of the root system are absorption of water and mineral from the soil, providing a proper anchorage to the plant part, storing reserve food material, and synthesis of plant growth regulators. ये दिखाया fibrous root, adventitious root. Region of the root. The root is covered by the apex or by a thimble-like structure called the root cap. This is the root cap. Figure, ठीक है. It provides the tender apex of the root as it makes its way through the soil. A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. The cells of this region are very small, thin-walled, and with dense protoplasm. They divide repeatedly. The cell proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. Obviously बात है, मेरिस्टेमेटिक है तो ग्रोथ का और elongation का रोल होगा ही. This region is called the region of elongation. This cell of the elongation zone gradually differentiate and mature. As this zone proximal to region of elongation is called the region of maturation. From this region, some of the epidermis cell form very fine and delicate thread-like structure called root hair. This root hair absorb water and mineral from the soil. ये सब दिखाया है. ये है रूट ऑफ डायग्राम लेबलिंग. कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ये रूट हेयर है, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैस्टमैटिक एक्टिविटी. आगे बढ़ते हैं. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट.
Root in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and mineral. They are modified for support, storage of food and respiration for 5.4 and 5.5. Taproot of carrot, turnip, and adventitious root of sweet potato get swollen and store food. Can you give some other example? Have you ever wondered what those hanging structure that support a banyan tree are? These are prop roots. Similarly, the stem of maize and sugarcane have supporting root coming out of the lower end of the stem. These are called stem root. In some plants such as Rhizophorus growing in swampy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upward. Such root called nematophores help to get oxygen for respiration. सब मॉडिफिकेशंस करवा दी, ये कहीं थ्योरी में मेंशन नहीं है और डायग्राम दे रखा है, स्टोरेज के लिए है ये, ठीक है। टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो भी रेस्पिरेशन की मॉडिफिकेशन में नेमेटोफोर इन राइजोफोरा, ठीक है। Next is the stem. Whatever are the features that distinguish a stem from a root, that stem is the descending part of the axis bearing branches, leaves, flowers, and fruit. It develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. The stem bears nodes and internodes. The region of the stem where leaves are born are called nodes, while internodes are the portion between two nodes. The stem bears buds, which may be terminal or axillary. Stem is generally green when young and later often become woody and dark brown. The main function of the stem is spreading out branches bearing leaves, flowers, and fruit. It conducts water, mineral, and photosynthesis. Some stems perform the function of storage of food, support, protection, and of vegetative propagation. Modification of stem. The stem may not be typically like what they are expected to be. They are modified to perform different functions. Underground stem of potato, ginger, turmeric, zaminkan, colocasia are modified to store food in them. They also act as organ of parenation to tide over condition unfavorable for growth. Stem tendrils, which develop from axillary bud, are slender and spirally coiled, help plant to climb, such as in gourds, cucumber, pumpkin, watermelon, and grapevine. Axillary bud of stem may also get modified into woody, straight, and pointed thorns. सारी मॉडिफिकेशन बता दी गई है कि क्या क्या मॉडिफिकेशन स्टेम ने ली है, ठीक है। थॉर्न आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स सच एज सिट्रस, बोगेनविलिया। दे प्रोटेक्ट दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। कोई खाने आएगा जानवर तो उसको काटा चुबा देंगे, जिससे कोई नहीं खाएगा भी, ऑब्वियस सी बात है, चुपती हुई चीज कौन खा सकता है। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम into flattened opentia or fleshy cylindrical euphorbia structure. They contain chlorophyll and carry out photosynthesis. Underground stem of some plants such as grass and strawberry etc. spread to new niche, and when older part die, new plants are formed. ठीक है। In plant like mint and jasmine, a slender lateral branch arises from the base of the main axis, and after growing aerially for some time arch downward to touch the ground. A lateral branch with short internode and each node bearing a rosette of leaves and tuft of roots is found in aquatic plants like pistia and echinacea and banana, pineapple, and chrysanthemum. The lateral branch originates from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil, and then come out obliquely upward, giving rise to leafy shoots. ये सारी रनर, स्टोलन और रोसेट ऑफ लीव्स उसकी डेफिनेशंस दी गई हैं, बट अलग से नहीं इन्होंने मेंशन किया हुआ, तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक क्या है, जिससे कि थोड़ा इजी रहे हमें याद करने में भी। मैंने अपनी एनसीईआरटी में मार्क किया हुआ है, और ऐसे ये पीडीएफ है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कोई एडिटिंग नहीं की हुई मैंने अभी तक।
तो हम मार्क कर लेते हैं इसको। इन प्लांट्स लाइक जैस्मिन एंड सिलेंड्रल ब्रांच, ये हो गया स्टोलन, ठीक है। नेक्स्ट इज पिस्टिया निकॉर्निया वाले हो गए ऑफसेट। ये फर्स्ट चैप्टर में है, अलग से मेंशन बिल्कुल सही से हुआ हुआ 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, बट वो रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से ही, तो उसका इतना कुछ रोल ही नहीं है। और ये ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी वाली जो चीज़ है, ये है रनर। एंड द लास्ट वन ओब्लिकली वाली है शक्कर। अब लिखे हुए पे मत जाना, अपने हिसाब से अपनी पेंसिल से लिख लेना, इससे लिखा नहीं जा रहा है सही से माउस से। शक्कर, तो ये हमारा डन हो चुका है स्टेप। Next we have the leaf. The leaf is a lateral generally flattened structure borne on the stem. It develops at the node and bear a bud in its axil. The axillary bud later develop into a branch. Leaves originate from shoot apical meristem and are arranged in an acropetal order. They are most important vegetative organ for photosynthesis. A typical leaf consists of three main parts: leaf base, petiole, and lamina. The leaf is attached to the stem by the leaf base and may bear two lateral small leaf-like structure called stipules in monocotyledonous. The leaf base expands into a sheath covering the stem partially or wholly. In some leguminous plant, the leaf base may become swollen, which is called the pulvinous. The petiole help hold the leaf blade to light, long, thin, flexible. Petioles allow leaf blade to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. The lamina or the leaf blade is the green expanded part of the leaf with veins and veinlets. There is usually a middle prominent vein which is known as the midrib. Veins provide rigidity to the leaf blade and act as channel of transport for water, minerals and food material. The shape, margin, apex, surface, of incision ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स, ठीक है। ये लेमिना दिखा दिया गया है यहाँ पे, स्टिप्यूल, पिटियोल, एक्सिलरी बर्ड, लीफ बेस। नेक्स्ट इज वेनेशन. The arrangement of veins and the veinlets in the lamina of leaf is termed as venation. When the veinlets form a network, the venation is termed as reticulate, जो कि डाइकॉट में होती है, ठीक है। ये वाली When the vein run parallel to each other within the lamina, the venation is termed as parallel, monocot में होती है. Leaves of dicotyledonous plant generally across reticulate venation, while parallel in venation is the characteristic of most monocotyledons. Type of leaves, ठीक है, based on incision की किसने कितना कट किया है, कहाँ तक किया है. A leaf is said to be simple when its lamina is entire when incised. The incision do not touch the midrib. When the incision of the lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of leaflets, the leaf is called compound. A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaf, but not in the axil of leaflets of the compound leaf. The compound leaves may be of two types. In a pinnately compound leaf, a number of leaflets are present on a common axis, the rachis, which represent the midrib of leaf as in neem. यानी ये वाली, इसको जहाँ पे ऑल्टरनेटली जा रहे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, और यहाँ पे सिर्फ एक ही नोड से जा रहा है, तो palmately compound leaf आगे दिखा रहे होंगे, हाँ. In palmately compound leaves, the leaflet are attached at a common point, that is at the tip of petiole, as in silk cotton. Phyllotaxy. Phyllotaxy is a pattern of arrangement of leaves on the stem or branch. This is usually of three types: alternate, opposite, and whorled. In alternate type of phyllotaxy, a single leaf arises at each node. Each node in alternate manner, as in China rose, mustard, and sunflower. Plants in opposite type,
A pair of leaves are right at each node and it lie opposite to each other as in Calotropis and guava. इसके एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको याद करना इज मैंडेटरी. PYQ तो है, रिसेंट तो नहीं मुझे इतना ध्यान. If more than two leaves arise at node and form a whorl, it is called whorl as in Alstonia. ये एलिस्टोनिया दिखाया है. ऊपर जाएंगे, चाइना रोज, गुआवा, सबका एक एक एग्जाम्पल दे दिया है. मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. Leaves are often modified to perform function other than photosynthesis. They are converted into tendril for climbing as in peas, into spine for defense as in cacti. The fleshy leaves of onion and garlic store food. In some plants such as Australian acacia, the leaves are small and short-lived. The petiole in these plants expand, become green and synthesize food. Leaf of certain insectivorous plants such as pitcher plant, Venus flytrap are also modified. सारी मॉडिफिकेशन गिनवा दी हैं और उसको माइंड में रख लेना. पी में क्लाइंबिंग टेंड्रिल, ये टेंड्रिल बन रहे हैं. कैक्टस में कांटे आ गए हैं. स्टोरेज हो गई है अनियन में, ठीक है. नेक्स्ट is the inflorescence. A flower is modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Internode do not elongate and the axis get condensed. The apex produce different kind of floral appendages, laterally or successive nodes. Instead of leaves, when a shoot tip transform into a flower, it is always solitary. The arrangement, solitary मतलब अकेला, the arrangement of flower on the floral axis is termed as inflorescence. Depending on whether the apex get developed into a flower or continue to grow, two major type of inflorescence are defined, racemose and cymose. In racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow. The flower are borne laterally in an acropetal succession. मेन एक्सिस बढ़ती चली जाती है और एक्रोपेटल सक्सेशन में ग्रो होते हैं. इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ. द फ्लावर आर बोर्न इन बेसिपेटल ऑर्डर. ये फोटो दिखाई गई है. यहाँ पे फ्लावर टर्मिनेट कर दिया प्लांट को और यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, आगे 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 बढ़ता चला जा रहा है. Next is the flower. The flower. The flower is the reproductive unit in the angiosperm. It is meant for sexual reproduction. A typical flower has 4 different kind of whorls arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel called the thalamus or receptacle. Flower का नीचे वाला हिस्सा. These are calyx. जो 4 whorls हैं वो कौन कौन से हैं? Calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx and corolla are accessory organs, while androecium and gynoecium are reproductive organ. In some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth. Okay, Liliaceae family वैसे कट चुकी है सिलेबस से, सिलेबस में नहीं है. When a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual. A flower have either only stem or only carpel is unisexual. In symmetry, the flower may be actinomorphic, radially symmetry, or zygomorphic, bilateral symmetry. When a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. Example, mustard, datura, chili. When it can be divided into 2 similar halves only in one particular vertical plane, it is zygomorphic. Pea, gulmohar, bean, cassia. A flower is asymmetric, irregular if it cannot be divided into 2 similar halves by any vertical plane passing through the center as in canna. A flower may be trimerous, tetramerous, pentamerous when the floral appendages are in the multiple of 3, 4, 5 respectively. Flower with bracts reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate, and those without bracts ebracteate. Based on the position of calyx, corolla and androecium in respect of the ovary and thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous. Figure 5.13 अभी हम देखेंगे एक एक करके. इन द हाइपोगाइनस फ्लावर बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके एग्जाम्पल से, और लास्ट ईयर अभी जो पेपर हुआ है उसमें तो वो पोजीशन से भी आया है.
डायग्राम से भी आया है। बेसिकली इट इज इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट, याद कर लो इसको पूरा पैराग्राफ, ठीक है। In the hypogynous flower, the gynoecium occupy the highest position while the other part are situated below it. The ovary in such flower is said to be superior. Example: mustard, China rose, brinjal. If gynoecium is situated in the center and other part of the ovary are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is perigynous. The ovary here is said to be half inferior. Example: plum, rose, peach. In epigynous flower, the margin of thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other part of the flower rises above the ovary, hence the ovary is said to be inferior, as in flowers of guava and cucumber and the ray of florets of sunflower. ये देखिए, फर्स्ट इज हाइपोगाइनस, बी एंड सी इज पेरिगाइनस, ये दोनों पेरिगाइनस की इमेजेस हैं, एंड लास्ट वन इज एपिगाइनस, हाइपोगाइनस। इसमें सबसे ऊपर है ओवरी, इसमें सबसे नीचे है, इसमें ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल है सारी चीज़ों के ओवरी, सेम लेवल पे मतलब। पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल whorls, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx is the outermost whorl of the flower and the member are called sepal. Generally sepal are green, leaf-like and protect the flower in the bud stage. The calyx may be gamosepalous, sepal united or polysepalous, sepal free. Next is corolla. Corolla is composed of petal. Petal are usually brightly colored to attract insect for pollination. Like calyx, corolla may also be gamosepalous, petal united, or polypetalous, petal free. The shape and color of corolla vary greatly in plant. Corolla may be tubular, bell shaped, funnel shaped, wheel shaped. डायग्राम में देख सकते हैं आप, कैलिक्स दिखाई है, कोरोला दिखाया है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और यह पूरे फ्लावर में दिखा दिया गया है। एस्टिवेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स। व्हाट इज दिस बदतमीजी भाई, ये लास्ट कैसे हो गया तुमको? देखो मैंने तो कुछ किया भी नहीं है तेरे साथ। Wasting my time, bro. The arrangement of sepal or petal in floral bud with respect to the other member of the same wall is known as estivation. जो अरेंजमेंट होता है सेपल और पेटल का, उसे एस्टिवेशन कहा जाता है। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। बहुत इजी है, कुछ हार्ड बात नहीं है। When sepal or petal in a wall just touch one another at the rim without overlapping, as in calotropis. Examples की तो दुकान लगी हुई है इस चैप्टर में। It is said to be velvet if one margin of the appendage overlap that of the next and so on. In China rose, ladyfinger, cotton, it is called twisted. Twisted if the margin of sepal or petal overlap one another but not in any particular direction, as in cassia, gulmohar. The estivation is imbricate. In P and bean flower there are 5 petals. The largest standard overlap the 2 lateral petals, wing, which in turn overlap the 2 smallest anterior petal, keel. This type of estivation is known as vexillary or papilinaceous. फर्स्ट वन इज वेलवेट, ये ऐसे साइड 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 बिल्कुल गैप छोड़ के एकदम बराबर बराबर में लगे हुए, कोई धक्का मुक्की नहीं है इसमें, थोड़ी थोड़ी धक्का मुक्की है बट एकदम लाइन से इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये इधर जा रही है, इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी कुछ भी कैसे भी कर लो। इसमें क्या होता है, 2 बड़ी स्टैंडर्ड लीव्स होती हैं, फिर 2 छोटी, फिर लास्ट में एक अटैच्ड होती है, ठीक है। ये दिखाया है ना, स्टैंडर्ड ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल विंग्स विच इन टर्न 2 स्मॉलर पेटल कील, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड्रोशियम. Androecium is composed of stamen. Each stamen, which represent the male reproductive organ, consists of a stalk or a filament and an anther. Each anther is usually bilobed and each lobe has 2 chambers. The pollen sac, the pollen grain are produced in pollen sac. A sterile stamen is called staminode. Stamen of flower may be united with
Other members such as petal or among themselves. When stamen are attached to the petals, they are epipetalous as in brinjal, or epiphyllous when attached to perianth as in flower of lily. The stamen in a flower may either remain free, polyandrous, or may be united in varying degree. The stamen may be united into one bunch or one bundle monoadelphous as in China rose, two bundle diadelphous as in pea, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया PYQ में, or into more than two bundle polyadelphous as in citrus. They may be a variation in the length of filament within a flower as in salvia and mustard. Gynoecium पर आते हैं. Gynoecium is the female reproductive part of the flower and is made up of one or more carpel. A carpel consists of three parts, namely stigma, style, and ovary. Ovary is the enlarged basal part on which lies the elongated tube. The style connect the ovary to the stigma. The stigma is usually at the tip of the style and is the receptive surface for pollen grain. Each ovary bears one or more ovule attached to a flattened cushion-like placenta. When more than one carpel is present, they may be free as in lotus or rose and are called apocarpus. They are termed syncarpus, which when carpel are fused as in mustard and tomato after fertilization. Sorry. After fertilization, the ovule develop into seed and the ovary mature into fruit. इतनी कुछ खास बात नहीं थी, बेसिक चीज़ें बताई गई हैं. एपोकार्पस, सिनकार्पस, प्लेसेंटा के बारे में बताया गया है. आगे प्लेसेंटेशन होगी इसलिए प्लेसेंटा के बारे में बता दिया. आगे आते हैं. The arrangement of ovule within the ovary is known as placentation. The placentation are of different type, namely marginal, axial, parietal, basal, central and free central. ठीक है. In marginal placentation, the placenta form a ridge along the ventral suture of the ovary, and the ovule are born on this ridge, forming two rows as in P. खा देते हैं साथ साथ, confusion नहीं होगी. On the ridge, साइड में ग्रो हो रही है. When the placenta is axial and the ovule are attached to its multilocular ovary, इसकी definitions important है भाई, confusion create करती हैं, इसीलिए इसको याद करना is must important. The placentation is said to be axial as in China rose, tomato and lemon. ये देखिए यहाँ पे एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखाई गई है, इसको बेसिकली बोला गया है एक्साइल प्रेजेंटेशन. In parietal presentation, the ovule develop on the inner wall of the ovary or in periphery part. Ovary is one chambered, but it become two chambered due to formation of false septum. Example mustard and argemone. Parietal वाले में दिखाया है ये. This one is parietal. When the ovule are born on central axis and septa are absent as in dianthus and primrose, the placentation is called free central. Free central बोला गया है इस वाले को. Last is basal. The basal presentation, the placenta develop at the base of ovary and single ovule is attached to it as in sunflower, marigold. This one is basal. Diagram भी important है इसके. Next is the fruit. The fruit is the characteristic feature of the flowering plant. It is a mature or ripened ovary developed after fertilization. If a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is called parthenocarpic fruit. Generally, the fruit consists of a ball or pericarp and seed. The pericarp may be dry or fleshy. When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer pericarp, the middle mesocarp and the inner endocarp. In mango and coconut, the fruit is known as drupe. ड्रुप बोला गया है, ड्रुप. दोनों में खाने वाले पोर्शन अलग अलग होते हैं, अभी आगे बता देंगे. They develop from monocarpally superior ovaries and are one-seeded. In mango, the pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp
a middle fleshy edible mesocarp, and an outer stony hard endocarp. In coconut, which is also a drupe, the mesocarp is fibrous. The seed. The ovule, after fertilization, develop into seed. A seed is made up of a seed coat and an embryo. The embryo is made up of a radicle and an embryonal axis, and one as in wheat, maize, or two cotyledon as in gram and peas. ठीक है, मोनोकॉट डाइकॉट बेसिकली बता दिया गया है, दो कॉटिलेडन वाले ग्राम और पीस, एक कॉटिलेडन वाला व्हीट एंड मेज. आगे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलेडनस सीड. द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज द सीड कोट. द सीड कोट हैज टू लेयर, द आउटर टेस्टा एंड द इनर टैगमेन. द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट. ये भी क्वेश्चन आता है. Through which the developing seed were attached to the fruit. Above the hilum is a small pore called micropyle. Within the seed is the embryo consisting of an embryonal axis and two cotyledons. The cotyledons are often fleshy and full of reserved food material. At the two ends of the embryonal axis are present the radicle and the plumule. Radicle and plumule दिखा दिया गया है. नीचे वाला पोर्शन इज रेडिकल, ऊपर वाला पोर्शन इज प्लेम्यूल. ठीक है. इन सम सीड सच एज कैस्टर, द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन is a food storing tissue and called endospermic seed. In plants such as bean, gram and pea, the endosperm is not present in mature seed and such seed are called non-endospermous. ये क्वेश्चन आता है. ठीक है. वैसे एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, क्योंकि दो कॉटिलेडन है तो उसमें फूड स्टोर होता है, फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, बट इसमें नहीं होता. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडनस सीड. Generally, monocotyledonous seed are endospermic, but some, as in orchid, are non-endospermic. In the seed of cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. The endosperm is bulky and store food. The outer covering of endosperm separate the embryo by a proteinaceous layer called aileron layer. The embryo is small and situated in the groove at the end of the endosperm. It consists of one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum. ये भी क्वेश्चन आता है. And a short axis with the plumule and a radicle. The plumule and radicle are enclosed in sheath which are called coleoptile, coleorhiza. Plumule with coleoptile P, radicle with coleorhiza R. ऐसे याद कर लो, कंफ्यूजन रहती है वरना फिर. ये डायग्राम देख लेंगे. डायग्राम पे डीपीपी वगैरह में मैंने क्वेश्चन देखा है, पीवाईक्यू का आई डोंट रिमेम्बर एज सच. नेक्स्ट इज सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट. यानी इसमें तो दो ही फैमिली हमारे काम की है, फैबियसी और सोलेनेसी और ब्रेसिकसी का ये जो डायग्राम दे रखा है ये 3 हो गई. और लिलियसी सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी चलो रीड कर लेंगे, छोटी सी फैमिली है. और बाकी रेस्ट ऑफ द फैमिलीज जो है वो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, वो बाहर से या तो नोट्स पढ़ने पड़ेंगे या कुछ और. देखते हैं उसका क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट. The description has to be brief in a simple and scientific language and presented in a proper sequence. The plant is described beginning with its vegetative character, roots, stem and leaves, and then floral characters, inflorescence and flower parts. After describing various parts of a plant, a floral diagram and a floral formula are represented. The floral formula is represented by some symbol in the floral formula. BR stand for bracteate, K stand for calyx, C for corolla, P for perianth, A for endoecium, G for gynoecium, G with an underline for superior ovary, G with a line above inferior ovary. ये मेल का सिंबल है एरो वाला, प्लस का सिंबल है फीमेल वाला, दोनों साथ में बाइसेक्सुअल. प्लस फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, परसेंटेज फॉर जाइगोमॉर्फिक. फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट. अगर फ्यूजन हो रहा होता है तो ब्रैकेट लगा देते हैं. एडिशन बाय अ सिंगल लाइन ड्रॉन अबव द. और अगर दो अलग अलग का फ्यूजन हो रहा है तो उसके ऊपर एक दोनों लाइन ऊपर से लाइन ड्रॉ करके ऐसे करके लाइन ड्रॉ करके अटैचमेंट शो कर देते हैं. ठीक है. A floral diagram provide information about the number of parts of a flower
Their arrangement and the relation they have with one another। ब्रेसिकेसी का डायग्राम दिखाया है, देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, 2+2, दो दो की सेम अरेंजमेंट होगी इसलिए 2+2, चारों की चार अलग अलग हैं तो 4। कोई भी फ्यूज नहीं है तो अलग अलग है, ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे ओवरी फ्यूज है तो ब्रैकेट लगा दिया गया है। यहाँ 4 की पोजीशन सेम है एंड्रोशन की, 2 की अलग है तो 2+4 ऐसे दिखा दिया गया है। बहुत सिंपल होता है फ्लोरल फॉर्मूला डी कोड करना। रिप्रेजेंट द मस्टर्ड प्लांट फैमिली ब्रेसिकेसी, जो अब हमारे सिलेबस में है। Description of some important families Fabaceae. This family was earlier called Papilionidea, a subfamily of Leguminosae. It is distributed all over the world. Vegetative character: shrub, herb, root with root nodules. Stem erect or climber. Leaves alternate, pinnately compound and or simple leaf. Base pulpinate, stipulate, venation, reticulate. इसको थॉरली पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसका एग्जाम्पल उठा के डाल देंगे और पूछ लेंगे कि लीव्स बताओ कौन किस में कौन कौन सी है, कैसे नहीं है, कैसे वो है। इनका डायग्राम भी दे रखा है, इसको देख लेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला, इससे भी क्वेश्चन PYQ तो आया है रिसेंट, एज सच कोई क्वेश्चन इससे नहीं आया। ठीक है, बहुत पुराना PYQ। इनफ्लोरेसेंस: रेसिमोस फ्लावर, बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, सेपल 5, गेमोसेपलस, वेलवेट, इम्ब्रिकेट, एस्टिवेशन, corolla petal 5, polypetalous, papilionaceous, consisting of a posterior standard, 2 lateral wing, 2 anterior ones, forming a keel enclosing stamen and pistil, bacillary estivation, androecium, 10 diadelphous, anther dithecus, ovary superior, monocarpellate, unilocular with many ovule, style single, legume seed, 1 to many, non endospermic। ये फॉर्मूला आ गया है बाइसेक्सुअल का, 5 कैलिक्स फ्यूज, कोरोला 1+2+2, डायडल्फस दिखाया है 9+1, सुपीरियर ओवरी विद G1। Many plants belonging to the family are source of pulses, gram, other same, मूंग, सोयाबीन, edible oil, सोयाबीन, groundnut and Diindicofera fibers and have forest, asbenia, trifolium, ornamental lupin, sweet pea, medicine, मुलेठी। मैंने ये इसलिए जल्दी पढ़ दिया क्योंकि मुझे याद है, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। बट इसमें कुछ नहीं है इतना ज़्यादा। दालें हैं, दालों के अंदर क्या कौन कौन सी दालें वो याद कर लो, एडिबल ऑयल है कौन कौन से वो याद कर लो, डाई में इंडिगोफेरा, बहुत सिमिलर है, फाइबर सन है, फॉर्डर में सेसबेनिया, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल ल्यूपिन, स्वीट पी और मेडिसिन में मुलेठी। बहुत ईजी सिंपल। इट इज लार्ज फैमिली कॉमनली नोन एज अ पोटैटो फैमिली। पटेटो, मेरे को पटेटो से सिर्फ आलू का पराठा याद आता है और कुछ। It is widely distributed in tropic, subtropic and even temperate zone। अब इसके करेक्टर्स देख लेते हैं। प्लांट मोस्टली हर्ब श्रब, रेयरली स्मॉल ट्रीज, हर्बिशियस, रेयरली वुडी। स्टेम होती है एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड सॉलिड। ये इसका डायग्राम भी आप देख लें, सिंपल सा है। और होलो हेयर और ग्लैबारस। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, ऑल्टरनेट, सिंपल, रेयरली पिनेट, कंपाउंड, एक्सटिपुलेट, वेनेशन, रेटिकुलेट। लीव्स की भी देख लें। फ्लावर कैरेक्टर: इन्फ्लोरेसेंस, सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोज एज इन सोलेनम। बाइसेक्सुअल फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कैलिक्स, सेपल 5 यूनाइटेड, परसिस्टेंट, वेलवेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम, स्टेमन 5 एपिपेटलस, यानी पेटल से मतलब अटैच होंगी। बाइकार्पेलिटी, obligatory place in carpus ovary superior, bilocular, placenta swollen with many ovule, exile, fruit, berry और capsule, many endospermous seed होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला देख सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, 5 फ्यूज, कैलेक्स 5 फ्यूज, कोरोला और एपिपेटलस है, दोनों आपस में अटैच हुए होंगे। 5 एंड्रोशियम, G2 with superior। Many plants belonging to this family are source of food. Tomato, brinjal, potato as potato family है। ठीक है। स्पाइस, चिली, मेडिसिन, बेलेडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी, टबैको, ऑर्नामेंटल, पिटूनिया। Summary: flowering plant exhibit enormous variation in shape, size, structure, mode of nutrition, lifespan, habit and habitat. They have well developed root and shoot system. Root system is either taproot or fibrous. Generally, dicotyledonous plant have taproot while monocotyledonous plant have fibrous root. The root is
Root in some plant get modified for storage of food, mechanical support, and respiration. The shoot system is differentiated into stem, leaf, flowers, and fruit. The morphological feature of stem, like the presence of node and internode, बहुत basic चीज़ें हैं अभी यहाँ तक तो. Multicellular hair and positively phototropic nature help to differentiate the stem from root. Stem also get modified to perform diverse functions such as storage of food, vegetative propagation, and production under different conditions. Leaf is a later outgrowth of stem developed exogenously at the node. These are green in color to perform the function of photosynthesis. Leaf exhibit marked variation in their shape, size, margin, apex, and extent of incision of leaf blade. Lamina, like other part of plant, the leaves also get modified into other structure such as tendril, spine, or climbic and protection respectively. The flower is a modified shoot meant for sexual reproduction. The flowers are arranged in different type of inflorescence. They exhibit enormous variation in structure, symmetry, position of ovary in relation to other part, arrangement of petal, sepal, ovule, etc. After fertilization, the ovary is modified into fruit and ovules into seed. Seed either may be monocotyledonous or dicotyledonous. They vary in shape, size, and period of viability. The floral characteristics form the basis of classification and identification of flowering plant. This can be illustrated through semi-technical description of families. Hence, a flowering plant is described in a definite sequence by using scientific term. The floral feature are represented in summarized form as floral diagram and floral formula. चैप्टर होता है खत्म, फिनिश. बहुत लंबा चैप्टर है ये, फिनिश हो गया है. खैर, और जैसा कि हमने पढ़ लिया है ये चैप्टर, इसके चैप्टर के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको तो लिख लिख के याद करना बनता है इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को. ठीक है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल अर्शी अंसारी and stay tuned for more content and get selected. Reserve a medical seat for yourself. Work hard for that. Bye bye.